Hello class 4 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher Sila and today we will start your third unit which is the human body and fifth chapter food and digestion. So let's get started. सबसे पहले आपको यहाँ दिया है learning objectives. After completing this chapter, we should be able to know about the importance of food, about digestion and the process of digestion in human body. Analyze which is the best diet needed by the body to be healthy and fit, about the need for cooking food, about some microbes and the diseases caused by them. इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एक introductory question. As soon as the sandwich is chewed, it begins to taste sweet because saliva changed the starch present in the bread to sugar. The sandwich has jam in it. आपके पास ये दो ऑप्शंस है कि सैंडविच में जैम था इसलिए मीठा लगा, या फिर जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेड को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो इन दो ऑप्शंस में से आपको जो भी सही लगता है उस पर आप टिक करेंगे. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. All living things need food to stay alive. Food helps us to grow and to stay healthy. It gives us energy to work and keep us fit and healthy. Look at the pictures and tick the food that are healthy to our body. आपको यहाँ पर कुछ खाने की चीजें दी गई हैं, इनमें से जो भी खाने की चीजें हेल्दी हैं उन सभी पर आप टिक करेंगे. चलिए अब चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. राइस, वेजिटेबल्स, fruits and pulses. Some of us also eat meat, fish and food contains nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Food also contains refuges and water. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे proteins. Proteins help our body to grow. They help our body to build muscles, other organs and blood. That is why food which contain proteins are called bodybuilding food. Proteins also help us to repair the wear and tear of the body. Children need more proteins than adults as they grow more rapidly than adults. Meat, fish, eggs, milk, cheese, pulses and nuts are rich in proteins. आपको यहाँ पर इन सभी प्रोटीन रिच चीजों की पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं जिन्हें अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates give us energy. People who do more physical work need more carbohydrates. Sugar and starch are two types of carbohydrates. Rice, sugar and potatoes are some of the food which are rich in carbohydrates. आपको इन सभी के पिक्चर्स भी यहाँ दिए गए हैं. Next topic is fats. Fats give us more energy than starch or sugar. Oil, nuts and butter contain fat. Fats help to keep our body warm. Extra fat is stored in the body for future use. However, we must not have too much fat. Foods that are rich in carbohydrates and fats are called energy giving food. इन सभी के एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं पिक्चर के साथ. नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals are needed in small amount by our body. They keep our body healthy. They also help our body to fight diseases. So they are called protective food. There are many types of vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Minerals such as calcium and iron are needed for our body. We need calcium for strong bones and teeth. Iron helps in formation of blood. Wheat, meat, eggs, fish, milk, cheese, vegetables and fruits are rich in vitamins and minerals. इन सभी के भी आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं. Next topic is roughage and water. Roughage is the fiber present in our food. It is necessary for the proper functioning of the digestive system. It adds bulk to the food. Water is essential for our body to function properly. 3/4 of our body weight is water. Next topic है आपका balanced diet. The food we eat every day is our diet. The diet
that provides all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. A balanced diet keeps us fit and healthy. Scientists use a food pyramid which shows how much of different types of food we should eat in a day for a correct balanced diet. आपको यहाँ पर ये फूड पिरामिड भी दिखाया गया है जो कि एक बैलेंस डाइट का है कि हमें कितने अमाउंट में किस टाइम पर कौन सी चीज खानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। इसमें एक स्टूडेंट अपनी टीचर से कुछ क्वेरी है उसके बारे में पूछ रही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। मैम, हाउ इज द फूड वी ईट यूज्ड बाय आवर बॉडी? हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी कैसे यूज करती है, स्टूडेंट ने ये पूछा। तो देखिए इस पर टीचर क्या जवाब देती है। फूड इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर टीचर कहती है कि हम जिस फॉर्म में खाने को खाते हैं वैसे वो यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए जब तक हम उसे च्यू करके उसे ब्रेक डाउन नहीं कर देते छोटे पार्टिकल्स में, तब उसके बाद ही हमारा खाना जो है हमारी बॉडी यूज कर सकती है एनर्जी के लिए। ये टीचर ने जवाब दिया। तो यहाँ पर उस बच्ची की क्वेरी सॉल्व हो जाती है। द बॉडी कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म वी ईट इट, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन to a simple form so that digestion। तो यहाँ पर हमने डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। This topic is the journey of food as soon as digestive system. Each part of digestive system has its own job to do, but all the parts work together so that digestion is carried out. Mouth. The teeth in mouth grind the food into the form of a paste. Saliva present in mouth helps the food to become soft and also break down starch to sugar. The swallowed food is collected at the time and changes it into a fine paste. The stomach. From the stomach, the food enters the small intestine. The small intestine. It is a long, narrow tube. In the small intestine, some more digestive juices make organs called liver and pancreas. The digestion of food is completed in small intestine and it enters the blood in liquid form. Large intestine. The undigested food enters in large intestine, which is abroad. Most of the water present in the undigested food is taken back into the blood. Rectum. Here before being thrown out of the body through the anus. Why do we need to cook food? Easy to digest and kill the germs present in it. Present in the food will enter our body and make us ill. Away excess water as the nutrients are lost from the food. Overcooking the food destroys the and some carrot raw. But other food have to be cooked before eating. Cooking makes the food tasty and easy to digest. It also kills the germs and chemical pesticides and insecticides. Boiling, steaming, methods of cooking. Bring the following food items: a slice of cake, idli, boiled corn.
नेम आर बेक्ड एंड ईटन। आपको दो और फूड आइटम्स कैसे नाम लिखने हैं या जिन्हें बेक किया जाता है। द पूरी वॉज डीप फ्राइड इन ऑयल। नेम फूड आइटम्स विच आर फ्राइड एंड ईटन। पूरी जो थी वो डीप फ्राई की गई थी, तो आपको यहाँ पर चावलों को उबालकर बनाया गया था। ऐसे ही उबालकर और कौन सी चीज से और क्या चीजें बनती हैं, दो एग्जाम्पल food. Do you know that why the vegetables spoil and decay after some days? The moisture and warmth outside spoil the food. Germs grow on the food, causing it to decay. How can we keep the vegetables and other food items fresh for a long time without getting spoiled? Food is kept in the refrigerator to keep it fresh for some days. To keep the food items edible for a longer time, example weeks or months, we preserve them. We can preserve them as pickle, jam and squash vegetables, raw mango, meat and chicken. Pickle are preserved with salt and oil. Orange marmalade. Are they sweet or salty to taste? Sugar also helps to preserve the fruit for a long time. People living in cold areas where it snows eat dry vegetables like cauliflower, brinjal, gourd, and hydration. Dehydrating food helps to preserve oil होता है। ऐसे ही जो शुगर बेस्ड चीजें होती हैं जैसे कि जैम्स है, स्क्वैश है, ये सभी भी शुगर की वजह से प्रिजर्व रखी रहती हैं। और कुछ चीजें हम फ्रिज में रख के भी यूज करते हैं। वहीं पर दैट वो खराब ना हो, ये कुछ तरीके होते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट। खाने को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो उसमें तेल डालकर, शुगर या फिर सॉल्ट डालकर प्रिजर्व कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है डिहाइड्रेशन, यानी कि उसमें किसी तरीके की कोई नमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोब्स। द germs that enter our body are so small that they can be observed only in microscope and hence they are also known as microbes. There are many types of microbes. माइक्रोब्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, फंगस जो होते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम कहते हैं। इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरिया। दीज आर प्लांट्स that are actually made up of a single cell. They cause diseases like typhoid, tuberculosis, cholera and pneumonia. Though some of these help us in making curd from milk and some medicines. Next is fungi. These are non-green plants that grow on dead matter. They cause skin diseases like ringworm. They are also responsible for food poisoning resulting from eating stale food. Next is viruses. These are smallest of all microbes and cause diseases like chickenpox, smallpox, influenza, common cold and polio. Next is protozoa. These are single-cell animals that grow in dirty, wet places. They cause diseases like malaria, dysentery, etc. अगला टॉपिक है आपका यूजफुल माइक्रोब्स। All microbes are not harmful to us. In fact, some microbes are useful to us as
They help to produce things that we use. Some bacteria help to prepare curd. Wine and vinegar are also made by the help of bacteria. Bacteria also help to break down food into glucose. Dead plants and animals are broken down to a simple form by some bacteria and help to keep the environment clean. Some fungi, like yeast, are used to prepare bread, idlis, and cakes, etc. Medicines like penicillin are made from them. Mushrooms, which are eaten as a delicacy, are also a type of fungus. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चलिए इस चैप्टर को करते हैं हम सम अप। Food helps us to grow and to stay alive. Food contains substances called nutrients, which provide nourishment to the body. Food contains nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins, and minerals, roughage, and water. The diet that provides all the nutrients in proper amount is called a balanced diet. A balanced diet keeps us fit and healthy. The food eaten by us cannot be used in this form. It has to be broken or changed into a simpler liquid form called glucose so that it can be used by the body. This process is called digestion. तो यहाँ पर आपका ये जो पूरा चैप्टर है फूड एंड डाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अलग अलग तरीके की खाने की चीजों के बारे में देखा कि वो कैसे बनती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या जरूरी होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सब जाना। साथ ही में डाइजेशन प्रोसेस के बारे में समझा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।